Hello everyone, we are back. We are a bit late. I must admit the fact, like Australia versus Pakistan, the game quite easily Australia won, but it was quite a remarkable knock by Bet Mooney. I mean, seriously, she one-sidedly took the responsibility and scored that blistering century. Alana King scored some runs. It was quite a collective effort from the Aussie women cricket team. So we have got the in the panel as usual. Anup sir on my left, who's at the Arun Jaitley Stadium, Delhi, because he's going to cover India versus West Indies Test match as well, which is in the next 8 hours, 7 to 8 hours or 6 hours. So he's there, and in the below we have got Ayan Chatterjee and Ayush Shekhar. So Anup sir, what do you make of this complete dominance, and also Australia's the batting got exposed, like they were 7 wickets down for 100 runs, below 100 runs. They could have easily lost the game. Yeah, thanks for saying this. But for me, I guess Ayush has lost the connection. But yes, but for me, I guess I would not call it as a complete dominance because see, Australia has 16-0 record over Pakistan in the World Cups or overall also in one day cricket. So Australia was expected to win this match and they won it. That's the first. The secondly, it was like, yes, they were Australia being 78 for 7 was like a laughing stock for the Australian team itself because Hmm. versus Pakistan, when you are batting first, everyone would have expected this Australian team. जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड कप के बहुत प्रबल दावेदार है. No team can come across Australia in this world. तो 8वीं बार जीत जाएंगे ये जाएंगे. अभी से हम सब बोल रहे कि ऑस्ट्रेलिया इज ए विनर है. वी आर नॉट गिवन चांसेस टू इंग्लैंड न्यूजीलैंड और एनीवन. तो ऐसी टीम तो जब पहले बैटिंग करते हैं तो श्योरली दे हैड टू स्कोर अबव मतलब उनका बेस लेवल होना चाहिए थी. ये पाकिस्तान विच इज अ वीकर टीम इन देयर सेंस, उनके ऊपर ऑल 300 एंड अबव स्कोर तो उनका पार होना चाहिए. 350 अबव उनका मतलब हाईएस्ट होना चाहिए एंड 300 अबव पार होना चाहिए. बट इट वाज अ नाइस एफर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी बॉलर्स क्योंकि आप पाकिस्तान के हर मैच कोलंबो में हो रहा है तो if they are acclimatized more to the Colombo pitch and everything. So Pakistan bowlers they really handled the Australian top order or the middle order you might say. 78 for 7 उन्होंने किया. फहीमत खातून, नहीं सॉरी, दैट वाज बांग्लादेशी. नशरा संधू, उसने 3 विकेट्स बीच में लेते ऑस्ट्रेलिया तो स्ट्रैंडल किया थी. ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपीरियंस थे जैसे ताहिला मैदरत हुई, एशले गार्डनर हुई, जिसने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को बेल आउट किया था वर्सेस न्यूजीलैंड वाइल बाय स्कोरिंग 102 रन. वहां भी ऑस्ट्रेलिया 122 फॉर 5 हुए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड. बट वहां एशले गार्डनर ने बेल्ड आउट किया. सो उसको भी जल्दी आउट किया, पूरा टॉप ऑर्डर ले लिया था. एंड यस, सो दे मेड ऑस्ट्रेलिया, मतलब थोड़ी डर पैदा किया था उन्होंने 78 for 7 करते. बट देन अगेन वी से दैट देर इज नो मनी फॉर एक्सपीरियंस. एंड ऑस्ट्रेलिया बेथ मुनी इज अ वेरी मच एक्सपीरियंस लाइक as we were discussing on the group. I said to Ayan also, like Heather Knight was the previous night for England because the Heather Knight with 151 days was most experienced. And even if Bangladesh take other wickets, wicket of either night was very important. Similarly here, the wicket of Beth Mooney was very important because उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन की पार्ट रही है वो. सो शी हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल कि ठीक है एलेना तीन वगैरह भी आ गई तो भी प्रॉब्लम नहीं है. एलेना तीन तो साथ में लेकर चली वो. ठीक है, टीम दार्थ ने 11 रन की है पर उसकी और इस बेथ मुनी की जो पार्टनरशिप थी वो थी उसने ऑस्ट्रेलिया को स्टेबिलिटी दी. और उसके बाद 100 रन पार्टनरशिप बिटवीन एलन अतीन जिसने शुरुआत में उसके साथ सिंगल डबल करके स्टेबिलाईज किया. और जब लास्ट के 3 ओवर बचे देन शी वेंट फॉर बाउंड्रीज एंड सिक्सेस टू ब्रिंग द फॉर मेडन 50 इन हर करियर ओनली at number 10. So ऑस्ट्रेलिया बैट डीप, एवरीथिंग इज फाइन. बट जैसे ऑस्ट्रेलिया के भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि
इंडिया छोड़ दो, पाकिस्तान, एशियन कंट्री छोड़ दो, पर अगेंस्ट द इंग्लैंड हु इज 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया ऊपर ते विकेट्स थो देंगे तो दे विल मेक देम डिफिकल्ट टू कम बैक इवन आफ्टर द आफ्टर विद द टेल ऑल्सो and bowling में. And then once Australia made 222, it was writing on the wall कि वो पाकिस्तान तो बॉलिंग में था ही लेंगे, तो पाकिस्तान बैटर apart from सिद्रा अमीन, no one looked in form in the entire series. सिद्रा अमीन ने जो इंडिया के खिलाफ 81 बनाए थे, उसका थोड़ा फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करते 35 ऑड रन बनाए, दैट ओनली सेव्ड पाकिस्तान फ्रॉम मोर वर्स डिफीट, कि उन्होंने 100 रन पार कर लिए. So overall, it was a dominating win in terms of runs for Australia. But हम्म। overall, Australia still has to work on their batting as well, because बार बार 5-6 विकेट गिरने के बाद टीम बेल आउट होती नहीं, क्योंकि एक क्रुशियल मोमेंट ऐसा भी आ सकता है, दो मैटर वो शायद सेमीफाइनल भी हो जाए अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की क्रुशियल मौके पे ऑस्ट्रेलिया अगर मौका दबा दे तो वो हार भी सकती. If they want to be invincible and going unbeaten in this World Cup, winning the title for 8 times, जो सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया really needs to fix these few mistakes in their batting as well. So that's my take on the whole match. It was a convincing win by runs, but seeing the Australian batting, it would have been more convincing because everyone expected Australia to make at least 325 to 330 runs versus Pakistan, given whatever conditions they are. That Australian team strong थी. Yeah, they are a strong team. Like the number eight, number nine, till they have the batter Selena King. No one expected her to smash this half century. It was quite a dominant win. But there are concerns. Look, the conditions are very different. From Colombo to you go to Vizag, you go to different venues. It's not like the conditions are same. So you have to acclimatize very quickly. So आयुष, आपको क्या लगता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत गया लेकिन वो थोड़ा सा डर पैदा हो गया, थोड़ा सा कहूंगा मैं कि वो भी हार सकते हैं, क्योंकि अगर हार जाते थे तो शायद क्वालिफाई के भी चांसेस मुश्किल है, स्टिल लॉन्ग वे फॉर द सेमीज. पर आपको क्या लगता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कुछ पलटवार करेगा, मतलब क्योंकि इनका नेक्स्ट मुकाबला तो इंडिया के अगेंस्ट ही है, संडे का मुकाबला जो है. हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने अभी कहा कि हार जाता, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, चाहे मेंस हो या विमेंस हो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर से कितने विकेट गिरे, 2 विकेट गिरे, 3 विकेट, वो कम बैक करना जानते हैं, सामने कैसी भी बॉलिंग अटैक हो. अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ, एक ऐसा ही सिचुएशन हुआ था मुंबई में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, 7 विकेट गिर गए थे, ऊपर से ड्यू, ऊपर से मैक्सवेल इंजर्ड, और वो खेल गया एक अलग नॉक, क्योंकि उसका पैड, उसको साथ मिला था पैट कमिंस का. यहाँ पे बेथ मुनी के साथ कौन खड़ा था? सब तो एक तरफ से निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, लेकिन वो भला हो अलाना किंग का, जिसने कुछ हद तक ठीक ठाक खेल लिया, और जैसी पाकिस्तान की करंट लॉट है, जैसी टीम है, 200 देखते हैं उनके डगआउट में अफरा तफरी मच जाती है. तो इतना रन उनके लिए काफी था कि उनके पास क्वालिटी बॉलर थे, इनके पास वो भी क्वालिटी बॉलिंग साइड भी नहीं थी, ना बैटिंग साइड थी. एक मतलब कह रहे हैं, एक प्लेयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोग चल रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा, 3 हैट्रिक हो चुकी है आपकी हार की. अगला आप हारते हो तो सीधे बाहर, जो कि अब शॉर्ट शॉर्ट लग रहा है कि अब बाहर ही हो. आप इस मुकाबले में मत रहना कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम आप उनको हरा दोगे. उनका भी न्यूजीलैंड की टीम का तो बैट चल रहा है, 2 मैच हारा है, एक जीता है उन्होंने, अगर मैं यस. गलत नहीं, एक शायद नहीं, 2 हारे, 2 हारे हैं शायद. हाँ, यस, यू आर राइट. 2 हारे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, इसको एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू बोल देम आउट. यू जस्ट कांट वेट फॉर देम टू मेक मिस्टेक्स. आज वाली मेक गलती नहीं करनी है ना वही. यस. आयन, तुम्हें क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान को खुश होना चाहिए था कि समझो 130 150 तक रोक लेते तो जीत सकते थे, मुश्किल जाता था, लेकिन यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क हो गया था, मतलब वो मैच में. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, definitely. I mean, Pakistan had their moments. I mean, with the ball, I mean, they reduced Australia to 76 for 7.
and then later to 115 for 8 also. But then Bet Mooney, well, the thing with Australia is what I'm seeing in the first two matches is the batting is totally failing. But one person or the other is standing up because they've got such a superstar lineup that one person is standing up. Whether it was Ash Gardner in the first game or Bet Mooney in the second game that she stood up, and then Lana King supported her with a maiden 50, and that really propelled the score to get to 221. And once the score went to 221 on that Colombo pitch, which was dry and suited the spinners, we knew Pakistan would struggle because Pakistan's batting was brittle, and we saw that against Bangladesh and India that their batting is not clicking at all. So once the 222 was the target, we knew this game was as good as over. And then they just folded like a pack of cards. And interestingly enough, on a dry pitch, it was the Australian seamers who took most of the wickets. You look at it, Kim Gart took 3 wickets, Megan Scoot took 2 wickets, and Animal Sutherland also took 2 wickets. So that was also an intriguing view for me to see that. I mean, to see the pace bowlers of Australia taking more wickets on a spinning pitch. But that's Australia for you. I mean, they got out of jail again for the second game in a row, and that's will only embolden them. They need to work on their batting. There's no doubt about it. Against big teams, if they're again 5-6 down in the 15, 16 overs, they're going to struggle. But I think they'll fix that, and that will be the most important thing. And I think they will do well. And against India, they'll be up for it because they know this is not an easy team, and that will be a blockbuster game on Sunday. Yeah, Australia versus India. Yeah. Yeah, India Australia always the next big rivalry after Ashes and everything. But I would say Pakistan, be proud of your bowling performance. Just like last 3 wickets you couldn't take. It they made a mess out of it. Catching was also not good and everything. It's a part of the game, but they missed an opportunity. Like they could have made headlines. Oh come on, like Pakistan defeated Australia, but that didn't happen. So let's see. But Australia got much needed 2 points. They would be aiming to finish at the top, which they like always. And in 2022, India also didn't qualify for the semi-finals, T20 World Cup. We should not forget it. We'll talk Yes, about that yes. later as well. So let's see. Thank you, everyone. Thank you, Anup sir. Thank you, Ayan, and thank you, Ayush. We'll be back with a new video very shortly. Very, very shortly. Yeah.